Good morning, children. Today we are going to discuss respiratory balance sheet. Now, the respiratory balance sheet. See, we have already studied about glycolysis. We have studied about Krebs cycle. Then we have studied about ETS. Now, respiratory बैलेंस शीट का मतलब है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी कितनी डेराइव हुई और हम ये देखेंगे कि एनर्जी कैसे डेराइव होती है. देख चुके हैं कैसे डेराइव होती है. ये कितनी डेराइव हुई ये कहने का मतलब है दिस इज एक्चुअली थियोरेटिकल कंसेप्ट. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कंसेप्ट एज सच. जो एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती है ये जो पता लगाना है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता. बॉडी में ऐसा होता भी नहीं है. ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और उसके बारे में हमें जानना है. तो देखिए, थ्योरेटिकल अगर कोई कंसेप्ट हो, प्रैक्टिकल ना हो पाता हो, तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो एज्यूम करनी पड़ती है. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज टू बी एज्यूम्ड. तो चलिए हम लोग कुछ चीज़ें पहले एज्यूम करते हैं. सबसे पहले एक बात एज्यूम करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस जो तीनों ऑपरेट कर रही हैं ये एक सीक्वेंशियल और ऑर्डरली इवेंट हो. ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये एक सीक्वेंशियल और ऑर्डरली इवेंट हो. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है इट इज अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस एंड देन व्हेन इट फॉर्म्स द पायरुविक एसिड चेंजेस इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में it is entering into TCA cycle, and then from there when NADH is formed it further enters into ETS, and then the amount of ATP which is formed is 38 ATP. Now in certain cases it is 36 ATP. जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से NADH को अंदर आने में 2 ATP खर्च हो जाते हैं, इसीलिए हम उसको 36 ATP बोलते हैं. जो बैलेंस शीट है पहला स्टेटमेंट एज्यूम करती है सीक्वेंशियल इवेंट है. दूसरा स्टेटमेंट ये है, इसका जो दूसरा एजम्पशन ये है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो, उसके अलावा कुछ ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं. थर्ड एजम्पशन इज दैट एनी सबस्ट्रेट और यू कैन से एनी रिएक्टेंट विच इज फॉर्म और यू कैन से एनी बायो प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग in these reactions, these bioproduct becomes a part of, for example, if it is a part of glycolysis, it becomes a part of, same thing will become a part of Krebs cycle. Then again it will become a part of ETS. जो intermediates हैं वो कहीं बाहर या अंदर ना जाएं. There should be no movement, which is not possible. You know, we have already studied that respiration is an amphibolic pathway. कहने का मतलब एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था. जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि फैटी एसिड जो है जब ब्रेक करता है, फैट्स जब ब्रेक करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो वो बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में और उसके बाद टीसीए साइकिल के एंटर कर सकते हैं. लेकिन जब बॉडी को ज़रूरत होती है फैट्स की, तो यही एसिटाइल कोएंजाइम में दोबारा फैट्स बना सकता है. ठीक उसी तरह प्रोटीन के साथ भी होता है. कहने का मतलब ये है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई कोई सब्सटेंस जो है ग्लूकोज वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट ना हो और डायरेक्ट वो यूज़ होता चला जाए. पायरुविक एसिड बनाए और पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में बनाए, देन एंटर करे टीसीए साइकिल में और देन एंटर करे ईटीएस में. ऐसा होता नहीं है. सो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन एजम्पशन से हम ये बताते हैं कि 38 एटीपी होता है. उसका एक टेबल भी है जो हम आपको आगे दिखाएंगे. ये देखिए, एक टोटल बैलेंस शीट के बारे में दिखाया हुआ हमने. ग्लूकोज अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, NADH इज फॉर्म, देन अगेन गेटिंग कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम में, UC, NADH and FADH both are formed, and then afterwards ETS system, through that ATP is formed. So you can see this is a sequential event. Now I've already told you sequential event होते नहीं हैं practically. Okay, now ये देखिए टेबल है which shows in case of glycolysis. You see glycolysis में देखिए
अमाउंट ऑफ ATP 2 फॉर्म हुआ, NADH2 2 फॉर्म हुआ, FADH2 फॉर्म नहीं हुआ, टोटल ATP ऑब्टेन्ड इज 8. ओके. Oxidative decarboxylation of pyruvic acid, again ATP formed nil, NADH2 formed 2, total ATP formed 6. Now let us talk about Krebs cycle. Total ATP formed 2, NADH2 formed 6, FADH2 formed 2, total number of ATP formed 28. Now the total comes to about 38, as you can see on the screen. Is it clear? So I hope you have understood this. Now if you compare fermentation with aerobic respiration, this is a very common question which is asked. In case of fermentation, there is net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose. But in case of aerobic respiration, you know, much more amount of energy is released. So, and moreover, one more thing I would like to tell you. In case of aerobic respiration, the conversion of NADH to NADS plus is comparatively very fast as compared to fermentation. So that you should remember. Now let us talk about homework assignment. Does sequential pathway exist in living organism? No. Answer is no. It cannot happen, because ETS cycle, whether you talk about ETS or Krebs cycle or glycolysis, they occur spontaneously, simultaneously, not sequentially. So that is the difference. Whenever there is a need of ATP, ATP will be formed, and whenever there is a need of fat, fat will be formed. Whenever there is a need of protein, protein will be formed. I hope you are understanding. Even pyruvic acid gets converted into protein when the organism requires it. So in living organism, sequential events do not take place. Answer is very, very clear. Compare fermentation and aerobic respiration, that I have already told you. Why NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation as compared to aerobic respiration. So the answer is, you know that in case of aerobic respiration, the amount of energy required is very, very high. So, but natural rate of respiration, or you can say rate of oxidation of NADH to NAD plus in case of aerobic respiration will be very high. Thank you. Have a nice day.